हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एड्रेस करने वाले हैं 2016 मेंस के क्वेश्चन को। जीएस पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. सो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में एड्रेस करेंगे, जैसे होता है मीन्स के आंसर राइटिंग में। दैट इज़ फर्स्ट वी विल डील विद द इंट्रो, देन बॉडी एंड देन अल्टीमेटली कंक्लूजन। तो यहाँ पे द हिडन फैक्ट इज़ कि कौन सी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। तो हम इंट्रोडक्शन में वी विल स्टार्ट विथ मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड देन थोड़ा सा उसमें हम ऐड करेंगे हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इजिप्ट, मेसोपोटामियन, ग्रीस। एंड उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में इसको कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे और कौन कौन से रीजंस थे दैट वो हमारा एंशिएंट कल्चर आज भी परसिस्ट कर रहा है, वेयर एज द कल्चर्स ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामियन, ग्रीस वो डिग्रेड और टाइम के साथ वो ख़त्म हो गए। बट इंडियन सिविलाइजेशन ने कैसे अपने आप को बहुत परसीव कर लिया तब तक, आज के डेट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल टाइम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। एंड जो भी रिकमेंडेशंस होंगे आपकी, जो भी रिकमेंडेशंस होगी आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग नाउ। तो लेट्स स्टार्ट विद मेंशनिंग द इंट्रोडक्शन। द इंडस वैली civilization was contemporary to that of Mesopotamia, Egypt, etc. The cultural and traditional heritage of Indus Valley is visible till date. Now, let us mention the factors and the things that are that of the ancient civilization are visible till date. Now, various, just a second, various socio-economic and cultural belongings can be cultural belongings of today's world can be traced with Indus Valley. यहाँ पे फीचर्स शो करेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग रिलीजन, worship of mother goddess, and worship of male deity, that is Pashupati, is linked to Shiva of modern world. Rituals and sacrifices, the yajnas and rituals
of ancient time exists till date. Third one being tolerance with the reform in the society. Many new religions and sects were able to flourish. So here we can give example of Buddhism, Jainism, Sikhism. Fourth point will be flexibility to the changing needs of society. For example, assimilation, various castes, sects over the time. Also we can give there exists Varna system and ashram system. This was also the reason. Now the fifth point can be absence of ill practices like slavery, which was a key factor in civilization of world, that is Egyptian, Greece, etc. Now, reasons that were responsible for longevity of Indian civilization. यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स डाल देंगे. फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेजन का, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, and Christianity, hampered the world civilization. The second reason being migration of people to greener areas. Now the closing remark that will made is the modern day India resembles the ancient cultures and religion. The Indus Valley
and Vedic civilization paved the way for modern day Hinduism. Now, with this, we have dealt this question in around 150 words, which I think is enough. अगर आपके पास और कोई भी ऑप्शंस एंड पॉइंट्स हैं जो कि हम इस आंसर में ऐड कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, as I will complete all the PYQs, mains PYQ of the UPSC. Thank you.